Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture 24. Students, today you are going to do the comprehension of lesson number 10, airports. Now look at the questions. Question number 1, what was the big building called for passengers? कि वो बड़ी इमारत मुसाफरों के लिए क्या कहलाती थी? If you have remember in my previous lecture, I have told you in the second paragraph about that building. कि हम उसे क्या कहते थे, उस बड़ी इमारत को क्या कहते थे जहाँ पे मुसाफिर जाते थे. सो द बिग बिल्डिंग वॉज कॉल्ड टर्मिनल. ठीक है, द आंसर इज द बिग बिल्डिंग वॉज कॉल्ड terminal. Next question, question number 2. In our terminal, where does a passenger go to and why? और टर्मिनल में पैसेंजर मुसाफिर जो था वो कहाँ जाता था और क्यों? Answer is that in a terminal, a passenger goes to the counter of an airline because they have arranged his टिकट. ओके, वो वहाँ इसलिए जाता था क्योंकि उन्होंने उसकी वो टिकट जो थी वो अरेंज की हुई होती थी. ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू पायलट्स कम्युनिकेट विद द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स? के पायलट्स के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर किस तरह रब्ता करते थे? एंड व्हाट मे हैपन इफ़ अ कंट्रोलर मेक्स अ मिस्टेक? और क्या हो जाए अगर कंट्रोलर जो है वो गलती कर ले? Students, if you have remembered in my translation and the second last paragraph of the chapter 10, उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से पायलट से ट्रैफिक कंट्रोलर रब्ता करते हैं और अगर उसकी एक गलती, छोटी सी गलती से क्या हो सकता है. सो द आंसर इज़ that air traffic controllers communicate with the pilots through radios, and if a controller makes a mistake, it may lead to a serious accident in which a number of people may be killed or injured. ठीक है, and if you have any problem, you can look at your book and you will find that answer too. But students, do write the answer in your own words, and if you have something else to write down, you can also write it down फ्रीली. ठीक है, यानी अगर आपके पास रादर देन दैट जो आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं इनसे अलावा भी आप चाहते हैं लिखना, तो you are free to write it down. Okay, do not hesitate, you can also write it down in your own words too. Now look at the question number 4. Why the runway is lit by hundreds of lights at night? In the last paragraph of this chapter, उसमें ये बताया गया था वेरी क्लियरली कि रात के वक्त जो है हज़ारों रोशनियों से रनवे क्यों रोशन होता है. अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज़ काइंड ऑफ अ टास्क फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन द आंसर बाय योर सेल्फ. ये अब आप खुद लिखेंगे. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लुक एट योर बुक एंड लास्ट पैराग्राफ, उसमें ये बताया गया है वेरी क्लियरली कि वाई द रनवे इज़ लिट बाय हंड्रेड्स ऑफ लाइट एट नाइट. एंड रिमेंबर, व्हेन वी हैव अ वाई, if the question is started with the why, it means you have to give a reason, और आपने उसके बीच में कंजक्शन बिकॉज का इस्तेमाल करना है. ठीक है, बट डू नॉट स्टार्ट द आंसर फ्रॉम द बिकॉज, बल्कि टेक सम आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन. लाइक आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, द रनवे इज लेड बाय हंड्रेड्स ऑफ लाइट एट नाइट बिकॉज. नाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द रीज़न कि रात के वक्त हज़ारों रोशनियों से रनवे क्यों रोशन होता है. ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ टास्क फॉर ऑल ऑफ यू, and I know you are all very brilliant and you can write it down the answer by yourself. ठीक है, चलें. Now look at the last question. Why are passengers checked before departing? आपको ये भी याद होगा कि पैसेंजर्स को क्यों चेक किया जाता है जब वो जहाज़ में दाखिल होने से पहले उन्हें क्यों उनकी तलाशी ली जाती है. इन थर्ड पैराग्राफ दे हैव टोल्ड यू द पैसेंजर्स आर चेक्ड before departing so that they are not carrying any firearms or dangerous weapons. उनकी मुसाफरों की चेकिंग इसलिए की जाती है कि कहीं वो अपने साथ कोई आतिशी असला या ख़तरनाक असला ना ले जा रहे हों. ठीक है ना. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल योर टुडेज़ वर्क एंड आई होप you are all are very going to do it very well. Okay students, inshallah we will meet again. So take care of yourself. Allah